Dear children, today we are going to study some important points for vectors in math subject of 12th class. So first point is, if k is any scalar or number, then we can always multiply a given vector A vector by that scalar. This is multiplication of a vector by a scalar. So it becomes k a1i plus k a2j plus k a3k by distributive law, because k scalar is multiplied to each of the term. Now if b vector and a vector are collinear, or we can also say that this is the condition of parallelism or anti-parallelism. Only the difference is in anti-parallel case we will be getting this k number as negative number, because that will depict opposite directions. So if two vectors are parallel, then we should be able to find a relative number k such that either b equals to ka or a equals to kb. So b1 upon a1 equal to b2 upon a2 equal to b3 upon a3 equal to k, where k is a scalar. Next point is, unit vector A is along a vector in space. The expression for unit vector is given as vector divided by its magnitude. Vector is expressed in 3D as a1i plus a2j plus a3k, and divided by magnitude expression is always the distance formula in space from origin, which is under root of a1 square plus a2 square plus a3 square. Now next is the condition of collinearity of 3 points. Whenever 3 points in space are the distinct points, means वो points अलग अलग होंगे, तो 3 points से आपको either एक straight line मिल सकती है. तो अगर आपको 3 points को join करने के बाद एक straight line मिल रही है, तो आप बोलते हैं कि 3 points are collinear, मतलब वो एक ही line पर lie करते हैं. And if these 3 points are non-collinear, then they will be making a triangle. तो इधर आप ये भी शो कर सकते हैं, कभी भी जब आपसे पूछा जाता है कि कोलिनियर है पॉइंट्स, तो आप प्रूव करिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तब उस कंडीशन में देयर शुड एग्जिस्ट 3 non-zero scalars which are x, y and z, such that we should be able to satisfy this relationship x into a vector plus y into b vector plus z into c vector equal to a null vector. Because एक equation homogeneous होने के लिए if left hand side is vector, right hand side should also be vector. And as well as the second conditions to be satisfied is, ये जो आपको तीनों स्केलर्स मिले हैं और तीनों नॉन ज़ीरो नंबर्स मिले हैं, उनका सम ज़ीरो होना चाहिए. Then we can say that AB vector and BC vector are collinear, because A, B, C, तो this is AB and this is BC, तीनों कोलिनियर हैं. या फिर B पॉइंट लेफ्ट में भी हो सकता है, then also BC will exist, but in that case BC will be longer than the other vector. So over here we are assuming that AB and BC are collinear. So remember, 2 conditions to be satisfied for collinearity of 3 points: x a vector plus y b vector plus z c vector equal to a null vector, as well as the sum of these 3 numbers should be equal to 0. Next is coplanarity of 4 points. आपको 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स गिवन हैं, A, B, C and D,
नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, मीन्स उसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। विथ पोजीशन वेक्टर्स, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, बी पॉइंट का बी वेक्टर, सी पॉइंट का सी वेक्टर एंड डी पॉइंट का डी वेक्टर। दे विल बी कोप्लानर if this relationship is satisfied for 4 given scalars such that as we had taken in the collinearity of 3 points. So this is x a vector plus y b vector plus z c vector plus w d vector equal to again a null vector. Again the second condition to be satisfied is the sum of all these 4 scalars should be equal to 0. So over here the fact is a b vector, a c vector and a d vector are coplanar. Coplanar means एक ही plane में बने हुए, as you can see this page of book. So by this page, if we are able to draw 4 vectors here or 3 vectors here, if we are able to draw all the vectors on the same plane, those vectors will be coplanar. Next condition is linearly dependent vectors. Dependent means one vector will be depending on other vector. So a set of non-zero vectors a vector, b vector and c vector is said to be linearly dependent if there exist scalars x, y, z not all zero, such that x a vector plus y b vector plus z c vector equal to 0 null vector, and these vectors are called as coplanar. And linearly dependent means any vector can be expressed in the form of other vectors. So just take the names clue wise. Next is linearly independent, means they cannot be expressed in the form of other vectors. So a set of non-zero vectors a vector, b vector and c vector is said to be linearly independent, means they cannot be expressed in the form of one another if x a vector plus y b vector plus z c vector equal to null vector, then x equal to y equal to z equal to 0, means each value should be 0. Such vectors a vector, b vector and c vector are non-coplanar. So let's take some problems on these concepts. Question I am taking as we have to show that the two given vectors are parallel to each other. So what we had taken as the condition that we should be able to find a constant such that a vector depends on another vector b. So let that scalar be m. So assume that first vector given is a vector and second vector is given as b vector. So सबसे पहले आप चेक करो कौन से वेक्टर के मल्टीपल्स लार्जर हैं. तो एज आई कैन सी बी वेक्टर के मल्टीपल्स लार्जर हैं. अब चेक करो आप क्या हम बी वेक्टर के मल्टीपल्स में से कोई कॉमन नंबर ले सकते हैं. तो आंसर इज यस. कौन सा कॉमन नंबर ले सकते हैं. सो वी कैन टेक कॉमन एज -2. हम 2 भी ले सकते थे बट तब अंदर साइन सेम रहते. नाउ द साइन इन इनसाइड क्वांटिटीज विल बी रिवर्स्ड. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज 2i -3j प्लस 4k. अरे ये क्या हो गया. एग्जैक्टली ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ये a वेक्टर के जैसा ही तो है. तो what can we express b वेक्टर इक्वल्स टू -2 इंटू a वेक्टर. दो बातें बताता है. पहली बात b वेक्टर एंड a वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं बट ये माइनस साइन बताता है कि देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड बी वेक्टर इज डबल टू दैट ऑफ वेक्टर a. सो आपके पास में दो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं कि बी वेक्टर की लेंथ a वेक्टर से डबल है
एंड बी वेक्टर और ए वेक्टर के डायरेक्शंस अलग अलग हैं, सो इसको हम एंटी पैरेलल ना बोलकर पैरेलल ही बोलेंगे. सो हाउ कैन वी ड्रॉ दोज वेक्टर्स? डायग्राम ड्राइंग इज नॉट मैंडेटरी, स्टिल फॉर द कंसेप्ट इट इज नीडेड. बी वेक्टर, सपोज 2 सेक्शंस बनाएं तो सिर्फ एक सेक्शन का बनाएंगे आप ए वेक्टर. तो दिस इज अ गिवन प्रॉब्लम. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर और नॉट कोलिनियर. तो नॉन कोलिनियर जब भी होंगे तो इनके मल्टीपल्स में आपको एक कॉमन रेशियो नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू इक्वेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट. ओके, सो वी हैव टू इक्वेट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. Means you cannot take a ratio in the case of non-linear और non-collinear vectors. तो जैसे यहाँ पर है आपके पास a वेक्टर का मल्टीपल 1 एंड राइट साइड में a वेक्टर का मल्टीपल 2 लैम्डा. So we can equate 2 lambda as 1. Hence we get the value of lambda as half. In second case b वेक्टर का मल्टीपल है 3, राइट साइड में b वेक्टर का मल्टीपल है माइनस म्यू. सो वी कैन इक्वेट माइनस म्यू इक्वल टू 3. तो द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल टू माइनस 3. सो दिस वी कैन डू इन द केस ऑफ कोलिनियर vectors which are given in the case not collinear. बिकॉज कोलिनियर के केस में आप a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कर सकते हैं, बट नॉन कोलिनियर के केस में आप इस रेशियो को इक्वेट नहीं कर सकते. आपको इस तरह से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हैंडल करना है. नाउ बेस्ड ऑन दिस टाइप द सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस लैम्डा इन ब्रैकेट a वेक्टर plus 2 lambda into b vector equal to mu a vector plus 4 mu b vector. Again we see on the main question a vector and b vector are not collinear. It means again we cannot take this ratio. So we have to equate the individual terms. a vector का multiple है 1 plus lambda. a वेक्टर का मल्टीपल राइट साइड में है म्यू. सो वी कैन यूज द वैल्यूज ऑफ b वेक्टर मल्टीपल. सो सेकेंड कॉलम इज 2 लैम्डा इक्वल टू 4 म्यू. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू एंड वी कैन यूज दिस वैल्यू हियर. सो दिस इज 1 प्लस लैम्डा के प्लेस पर 2 म्यू इक्वल टू म्यू. So this answer will be mu equal to minus 1 and hence lambda equals to minus 2. This is for the second question. Now same style is the third question we are taking. Third question is 3 lambda plus 5 a vector plus b vector 2 mu a vector plus lambda minus 3 b vector. So over here again we can equate the individual components. So 3 lambda plus 5 equal to 2 mu. In second column the multiple of b vector is 1. The multiple of b vector is lambda minus 3. So lambda minus 3 equal to 1. Therefore lambda equals to 1 plus 3 means 4. We can use this value here. So this is 12 plus 5 equal to 2 mu. Therefore mu equal to 17 by 2 and the value of lambda is equal to 4. Next question is, are the following set of vectors linearly independent? तो हम लोग देख चुके हैं इंडिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग है कि क्या आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो हम लोग इसके अपोजिट वे में चलते हैं. हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले किसके मल्टीपल्स बड़े हैं. तो एज प्रीवियस केस लाइक
बी वेक्टर में आई, जे एंड के मल्टीपल्स बड़े हैं। द सेकेंड स्टेप टू सर्च इज, क्या हम बी वेक्टर के कंपोनेंट्स में से कोई कॉमन नंबर ले सकते हैं? सो यस, ले सकते हैं। तो सपोज आपने कॉमन ले लिया 3, तो इन साइड द ब्रैकेट इट इज आई माइनस 2j प्लस 3k। अरे फिर से क्या हो गया, फिर से पूरा का पूरा ए वेक्टर मिल गया आपको यहाँ पर। सो बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 इंटू ए वेक्टर। अब यहाँ पिछले बार की तरह माइनस साइन नहीं है, इट मीन्स वॉट, बी और ए के डायरेक्शन सेम है, मतलब एग्जैक्टली पैरेलल है, बट बी का मैग्नीट्यूड ए के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। इट मीन्स क्या हुआ, आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। इट मीन्स क्या हुआ, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो व्हाट विल बी दिस आंसर? नो, द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली independent because clearly this relationship shows that they are linearly dependent. अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो एक पार्ट का बनाना पड़ेगा आपको ए वेक्टर, और इससे ट्रिपल पार्ट्स का बनाना पड़ेगा आपको बी वेक्टर which is going in the same direction. So this diagram shows that b vector is 3 times of a vector. It means this is multiplication of a vector by a scalar number 3. Now let's take another question where we are given 3 vectors in the question, a vector, b vector and c vector, or question head remains same. You have to check whether the following set of vectors is linearly independent. So what is the main condition for linearly independent? You should note down all the conditions together for given conditions. Linearly independent की first condition आप लेते हैं, x into a vector plus y into b vector plus z into c vector should be equal to null vector, as well as the second condition for linear independent vectors is the values of x, y and z must be individually equal to 0. तो हम लोग इसमें वैल्यूज डालते हैं. फर्स्ट x, the value of a vector is minus 2i minus 4k plus y, the value of b vector is I minus 2j minus k plus z. The value of c vector is I minus 4j plus 3k, and we put these values equal to a null vector. Now we multiply all the numbers inside the bracket to obey the distributive laws. So we get minus 2xi minus 4xk plus yi minus 2yj minus yk plus zi minus 4zj plus 3zk all over. You may take precaution to apply caps over all the unit vectors in the question. Now this is again equal to the null vector. Now a null vector can be represented as 0i plus 0j plus 0k in the form of orthogonal vectors or orthogonal unit vectors I, j and k. So we can take in the first term I common. So inside the bracket it will be minus 2x plus y plus z. This is first expression. Then we can take j common. So here is no j. Here it is minus 2y minus 4z. Then in the last we can take k common.
So first is minus 4x, second is minus y, and in third plus 3z. So these are the terms related to k vector. Now we can equate each bracket term equal to 0 because LHS is equal to RHS. So first equation is minus 2x plus y plus z equal to 0. Second equation minus 2y minus 4z equal to 0. Third equation minus 4x minus y plus 3z equal to 0. But since x equal to y equal to z equal to 0 according to the second given condition, hence we can say that the given vectors form a set of linearly independent vectors, and hence A vector, B vector and C vector are non-coplanar vectors. It means we cannot draw these three vectors on a single plane. Now this is next question where we have to find distance of point 2, 3, 4 from first xy plane, second x-axis, third origin. Obviously distance formula will be used, and fourth another point is given, and between the first point and second point we have to find the distance. So moreover this problem is using the previous concept which we have studied in 10th class in coordinate geometry. So let's assume we are trying to draw a 3D figure. This is x-axis, y-axis and it is z-axis. So this diagram is making a triad orthogonal system in which the angle between x and y 90, x and z 90, y and z 90, but due to the lacking of the space, that is the third coordinate, this figure seems to be as 2D. Or maybe it is lacking in the case that these mutual angles are not 90 degree, but you have to assume the any corner of your room in which you are studying now. So any corner will be recalling the figure for 3D space. So first of all, this point is situated, suppose somewhere here. This is the point 2, 3, 4. Now this plane is the XY plane. This plane is the XY plane. So what is the distance of this point from XY plane? That will be the Z coordinate. So answer for first question will be mod of Z equal to 4 units. Now the question is raised up, why mod? Because distance is always positive. Second question is, we have to find the distance of the given point from the x-axis, means from this axis. So we can take perpendiculars on y-axis and z-axis. Since the y coordinate is 3, it means this height of the given point is 3 and z coordinate is 4, means its location on z-axis is 4. So in this way we can find its distance from x-axis. So this is equal to under root of y square plus z square. Then under root of y is 3 and z is 4. So this is equal to 5 units. Now in the third part of the question we have to find the distance from origin. Obviously directly applying the distance formula, it is under root of x square plus y square plus z square. So this is under root of 2 square plus 3 square plus 4 square, and it comes out as 4 plus 9 plus 16. So this is square root of 29 units.
Now to solve fourth question, just we will be taking the distance formula. So for fourth question, the distance between these two given points will be x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square, but kindly take care of the brackets as well as the sign. So this is under root of x2 is minus 2 minus 2, so it is minus 4 square plus y2 is 7 and y1 is 3, so this is 7 minus 3 square plus z2 is 3 and z1 is 4, so it is 3 minus 4 bracket square, so it is under root of 16 plus 16 plus 1. So it comes out as under root of 33 units. In next question, it has to be proven that the line segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. तो when I recall, आप शायद ये theorem 10th क्लास में पढ़ चुके हैं in coordinate geometry again और triangle chapter again, but in this question we have to prove these given condition with the help of vectors. सबसे पहले हम लोग एक triangle लेते हैं. Let this is a triangle in which we are taking the first vertex as origin. Now second is A and third is B. As we know that from origin all vectors go outward, that is the position vectors. So if we are taking the midpoint of side OA, that is vector OA, let's assume this point is M. Now OM will be half of OA as well as MA will be half of OA. Second, इसका midpoint लिया हम लोगों ने because according to the question हमको दो sides के midpoints को आपस में join करना है. So हमने जब इसका midpoint लिया तो ये आया N, और जैसे ही हमने ये दोनों midpoints को join किया तो what we have to prove that कि जो MN की लेंथ होगी वो AB की लेंथ के हाफ होगी, एज वेल एज जो MN वेक्टर एंड AB वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर होंगे. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक इट दैट MN वेक्टर इक्वल्स टू हाफ इनटू AB वेक्टर. सो सबसे पहले हम लोग एक कोई भी वेक्टर ले लेते हैं. तो लेट्स एज्यूम आई एम टेकिंग वेक्टर OM दूर जाएगा, कोऑर्डिनेट आउटवर्ड जाएगा. सो आई कैन रिप्रेजेंट दैट OM वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA वेक्टर. It is given in the question and we have drawn the suitable diagram. Second, we can take ON vector which is equal to half of OB vector. This is also given as we have to take midpoints of two sides of the triangle. अब हम लेते हैं triangle OMN और इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ. सो फॉर ट्राइंगल लॉ द टू साइड्स मस्ट बी इन कंटिन्यूएशन. सो हाउ कैन वी ऐड देम? अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ we can take that OM vector plus MN vector equals to the vector which is breaking the order or the sequence. So this is ON, that is the third vector. So third vector shows the resultant of these two vectors that we have already studied. So by this MN vector will be equals to ON vector minus OM vector. Now we can use these two equations to put it here
So we get Mn vector equal to, in place of On, this is Ob by 2. In place of Om, this is Oa by 2. We can take half common. So within bracket OB vector minus OA vector, and again by triangle law, this is AB vector. So what we wanted is proved that Mn vector is half of AB vector, as well as this half number denotes that Mn vector is parallel to AB vector. So Mn vector and AB vector are collinear, and it is half of the length of AB vector.